सो लास्ट क्लास रे आमे देखिथिले कि हमर oocyte रो डेवलपमेंट सो केमती सेकेंडरी oocyte डेवलप होचे तो आज देखिबा मेंस्ट्रुअल साइकिल केमती फीमेल बॉडी रे कंप्लीटली साइकिल केमती मूव होची एवं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट डे टू 28 to 35 days. So the NCERT lining, the first liner some NCERT lining. So before going to the NCERT, let's see which hormones are responsible for the smooth function of a menstrual cycle. Okay, so को कौन आमर दरकार होची को हार्मोन आम दरकार होची मेंस्ट्रुअल साइकिल रो प्रॉपर फंक्शन पाई. सो एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और इनिबिन ये चारिटा हार्मोन. सो एस्ट्रोजेन रो फंक्शन कौन ना एस्ट्रोजेन रो फंक्शन कहूची ने प्रमोट द डेवलपमेंट आउ मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स. ओके, सो এটা कौन করছি না एस्ट्रोजेन कौन করছি না प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स. सो এটা कौन করছি না इंक्रीज द प्रोटीन एनाबॉलिज्म को इंक्रीज करছি, लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रोल. ओके, और मॉडरेट लेवल इनहिबिट करूची रिलीज ऑफ जीएनआरएच और एफएसएच और एलएच रो इनहिबिट करूची जते बेले जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रे. सोर्स को सोर्स रु एस्ट्रोजेन रिलीज होची ना थिका इंटरना, ग्रानुलोजा सेल, कार्पस लुटियम और प्लासेंटा. नाउ कम्स टू द प्रोजेस्टेरोन. इट वर्क्स विथ एस्ट्रोजेन टू प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन. एंडोमेट्रियम कौन यूटेरस रो लास्ट लेयर, ऐसा नो इनर लेयर, ऐसा नो. सो वर्क विथ एस्ट्रोजेन टू प्रिपेयर द जो स्टार्टम फंक्शनलिस्टा आमर कौन प्रिपेयर करिया पई फॉर द अटैचमेंट ऑफ जाइगोट. सो कोटी सो एटा किए प्रिपेयर करछि ना प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर करछि ना प्रिपेयर मामारी ग्लैंड टू सीक्रेट मिल्क आल्सो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन रोल प्ले करे. इनहिबिट द रिलीज ऑफ जीएनएचआरएच नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रे कॉल्ड एज द एंटी अबॉर्शन और प्रेगनेंसी हार्मोन. एटा कहा जाय भी प्रेगनेंसी हार्मोन और एंटी अबॉर्शन हार्मोन. ओके, रिलैक्सिन कौन करछि रिलैक्सिन हार्मोन नो काम कौन ना इनहिबिट्स द कंट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन स्मूथ मसल ड्यूरिंग द लेबर. जेतबे लेबर पेन हुए इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ pubic symphysis and uterine cervix so that the smooth movement of the embryo or the baby from the mother's womb to the outside can be done. So source कौन है यार corpus luteum और placenta. ये progesterone source कौन था corpus luteum and placenta. तो corpus luteum 4 weeks में देता है, then placenta progesterone supply करता है in the time of pregnancy. इनहिबिन काम कौन तुम जानिच. इनहिबिन इन केस ऑफ ये सटोली सेल करे इन केस ऑफ मेल और इन केस ऑफ फीमेल एटा कौन ग्रानुलोजा सेल. सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड टू ए लेसर एक्सटेंट एलएच. ओके, एफएसएच स्पेसिफिकली करे बट एलएच करे बट लेस देन द एफएसएच. तो सोर्स कौन ना ग्रानुलोजा सेल, कार्पस लुटियम और प्लासेंटा. ओके, एबे देखिबा कि एटा ही टोटल साइकिल हमर. ओके, सो start from the 1 to 28 to 35 days according to the it varies from person to person. Okay, so the varies from person to person means last 14 days is normal. So if you will see this 28 to 35 days I'm saying, so in this 28 to 35 days last 14 days are constant. Okay, generally it differs in the fast bleeding phase. So it may be 5 days, it may be 4 days, it may be 7 days. So according to that, so menstrual cycle changes, it varies from 28 to 35 days. Okay, so we will discuss how it is happens. So fast 5 to 6 days or 7 days it's called as the bleeding phase. Okay, then after bleeding phase the pre-ovulation stage means before ovulation, that is called as the pre-ovulatory phase. Okay, pre-ovulatory phase.
और एक ऑल्सो वी कैन से दैट आम ये कहीपर जे एस्ट्रोजेनिक फेज एटा भी ऑल्सो फोलिकुलर फेज ओके फाइन फोलिकल डेवलपमेंट होची तो ये कहे फोलिकुलर फेज एस्ट्रोजेन रोल अच्छी एस्ट्रोजेनिक फेज ओव्यूलेशन पूर्वर यहाँ से कहे प्री ओव्यूलेटरी फेज 7 to 13 days ओके देन यहाँ प्रोलिफरेटिव फेज ओके प्रोलिफिकेशन हो सो केते दिन यहाँ ना 7 to 13 days 13 to 14 डेट इज द ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन हो सेकेंडरी ओसाइट कॉर्पस ल्यूटियम रु बाहर को आसूची ओके देन स्टार्ट होची हमर कौन कॉर्पस ल्यूटियम अप टू 9 days कॉर्पस ल्यूटियम कौन रोची जदि इन केस द प्रेगनेंसी होनी से कथा कहूँ इफ इन केस द प्रेगनेंसी डज नॉट हैपन द कॉर्पस ल्यूटियम बीइंग सर्वाइव इन द कौन ओवरी रे केते दिन रोची ना अराउंड 9 days इट टेक्स 9 days and after that 9 days it starts degenerating and in the 28 days whatever the day means particular cycle continues in that day it starts degenerating the last 5 days it's degenerating okay so 9 5 14 days this 14 days is constant so this phase is called as the post after ovulation so that it is said that post ovulation जो ovulation पर होची तो आम कहूँ post ovulation days or you can say that it is luteal phase because it is the luteum corpus luteum stage or you can say that it is secretory stage or you can say it also it is the progesteronic phase so progesterone मात्रा अधिक देखा जाउची so progesteronic phase भी कहि परिबा so before ovulation आम कहबा estrogenic phase after ovulation progesteronic stage before ovulation also can be said as pre ovulation stage after ovulation we can say that as a post ovulation stage आउ bleeding phase the first 5 to 7 days is bleeding phase so these are the naming of the phase okay now so in which phase what happens okay now from starting that you know that this early pre-follicular primary follicular then rest to the primary follicle so in these so this takes around 5 to 7 days okay so what happens in that FSH LSS is completely less and it releases estrogen okay. Then in the pre-ovulatory stage this primary follicle gives rise to the secondary follicle where the estrogen and estrogen increase of estrogen होची एठी आउ नेगेटिव फीडबैक मेकानिज्म रे FSH और LH रो मात्रा कमुची ओके बुझियला सो प्री फॉलिकल रे इटे कौन एस्ट्रोजेन इनक्रीज होची प्राइमरी फॉलिकल रे जिते बड़े प्राइमरी फॉलिकल रो सेकेंडरी फॉलिकल होची अगेन एस्ट्रोजेन मात्रा अधिक होची जोटा नेगेटिव फीडबैक क्रिएट होची आ सेठी कौन ना FSH LS रो परिमाण कमुची देन सेकेंडरी फॉलिकल एटा आसला हारी प्री ओव्युलेटरी सेकेंडरी फॉलिकल कौन होती ना आमे देन टर्शियरी फॉलिकल को डेवलप होची so when the secondary follicle develops to the tertiary follicle then the amount of estrogen is increased in a dramatical way so बहुत अधिक हो जाउची so it is going to the positive mechanism so it कौन जो जेतल positive mechanism feedback होची ताले कौन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बढ़िबो जेतल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बढ़िबो ताले FSH और LH भी बढ़िबो बट FSH और LH बढ़ुची बट FSH बढ़ुची मात्र 2 ରୁ 3 गुण और LH बढ़ुची 6 ରୁ 10 गुण एटी कौन पे एटू 2 ରୁ 3 गुण बढ़िला FSH ना जेहेतु इनिविन एटी अछि एको इनिविट करूची कौन इनिविन इज इनिविटिंग का को करूची FSH रो कंसंट्रेशन को इनिविट करूची एट पे 2 ରୁ 3 गुण जेहेतु इट्स हैविंग द लेस अफेक्ट गिविंग द लेस अफेक्ट टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सो LH ता 6 ରୁ 10 गुणा होची आ FSH ता 2 ରୁ 3 गुणा होची सो FSH रो रोल कौन एठी FSH कौन करिवो ए जो मियोसिस 1 थिला एटा कंप्लीट कला बुझी परला जो मी सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल रो सेकेंडरी फॉलिकल जो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियल फॉलिकल हला सेठी कौन थिला ना हमर कौन जे मियोसिस 1 टा को कंप्लीट कला हला देन एठी जो LH रो काम कौन ना 6 ରୁ 10 गुण हला ना ये जो 6 ରୁ 10 गुण हला ये LH को वर्तमान कौन ना ग्रानुलोजर सेल का को कला सिग्नल देला ना थिका इंटरना
कौन ठीक इंटरना को सिग्नल देला ना टू रिलीज प्रोजेस्टेरॉन. सो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करें. This release of progesterone ensures that the ovulation happens, means this 2 degree oocyte comes out from the follicle. So ये कौन है ना सेकेंडरी फॉलिकल टा टर्शियरी फॉलिकल को डेवलप होला. ये टर्शियरी फॉलिकल कौन होला ना ये जो एस्ट्रोजेन रोल रे पॉजिटिव फीडबैक मेकानिज्म रे एफएसएच और एलएच को गुणर बढ़ेला. एफएसएच रा अमाउंट और एलएच रा अमाउंट को बढ़ेला हैला. त ए एफएसएच ता 2 रु 3 गुण होला आउ एलएच ता 6 रु 10 गुण होला. तापर कौन होला ना एफएसएच ता कौन कला म्यूसिस वन को कंप्लीट कला. आउ ये जो एलएच थिला एटी कौन कला ना ग्रानुलोजा सेल को सिग्नल कर देला कि ठीका इंटरना टू रिलीज प्रोजेस्टेरॉन एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन मेक्स इट हैपन टू द रिलीज ऑफ अ सेकेंडरी oocyte. सो सेठी से कोटा सेकेंडरी फॉलिकल टा डेवलप होला टर्शियरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल टा डेवलप होला मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल. एट मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल 2 डिग्री oocyte बाहर को आसी गला बुझेला. अच्छा 2 डिग्री oocyte जदि हमर कोन आसीबो हमर स्पर्म आसीबो. स्पर्म आसिला जदि ताले एटा कोन ओवम रे हबो. देन द प्रेगनेंसी हैपन्स ओवर हियर. देन एटा स्टार्ट हबो. बट इफ प्रेगनेंसी डज नॉट हैपन व्हाट हैपन्स. सो वी विल स्टडी इन दिस साइकिल. 2 डिग्री oocyte हमर स्पर्म आसिलानी ताले कोन होला ना ना ये जो कॉर्पस लूटम टा थिला ओके सेटा कोन होला स्टार्ट करिवो. अगेन जो कॉर्पस लूटम टा आसिला एवं एकु माने कॉर्पस लूटम टा एटी प्रेजेंस टा को के एन्श्योर करूची ना एलएच एन्श्योर करूची. देन एलएच टा कोन कॉर्पस लूटम बीइंग इन द ओवरी फॉर द 9 days बाय द एक्शन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग होबो. जेते बेले एलएच रा अमाउंट बढ़िला सेते कोन नेगेटिव फीडबैक मेकानिज्म होबो. सो व्हेन द नेगेटिव फीडबैक मेकानिज्म स्टार्ट्स then this LH also going down, and when LH going down the corpus luteum presence cannot be secured. So then corpus luteum starts degenerating. एटी कौन है degenerate हवा start हला. ये corpus luteum 9th day रे आसिकी देखो 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 8 ही पखा बाकी 23 days रे start हला कौन start degenerating 23 days. So 8 हो then 5 days 1 2 3 4 5. So this 5 days corpus luteum is कौन degenerated. Then it formed the corpus albicans. Okay. Now 80 कौन हला 80 जितला आसिक albicans पहुंचला 80 प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल इज कंप्लीटली जीरो. ओके आ सेठी कौन हबो ना गोटे बॉडी हार्मोन रिलीज हबो ताको कहूची आमे प्रोस्टाग्लैंडिस. ये प्रोस्टाग्लैंडिस कौन करे ना वैसोकंट्रिक्शन करे. वैसोकंट्रिक्शन कौन ना जो यूटेरस एवरी टाइम यूटेरस थिंक्स दैट देयर विल बी ए fetus, means there will be the fertilization and embryo will be developed and embryo will come and attach to the stratum functionalis. So every time the uterus prepares himself for the fertilization process to begin. Okay, so fertilization process ta habo ebong uterus ta sabu bele ready thibo je every time se thibo bhabi thibo ki je there is a chance of a fertilization. So automatically se ready he ki rahi thibo. So for the कौन कि एम्ब्रियो आसिक आटाच हम किंतु जदि आमर कौन है आमर हेलानी कौन फर्टिलाइजेशन हेलानी. सो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिस है से भासो कंट्रैक्शन करे. तो भासो कंट्रैक्शन कौन ना ये जो ब्लड वेसल्स गुड़ाक कनेक्ट होता है स्ट्रैटम फंक्शनालिस को जोटा एंडोमेट्रियम लेयर को सेटा कौन है नैरो कर दिए. भासो कंट्रैक्शन मीन्स द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स. सो व्हेन द blood vessel is narrowed, so blood supply to the stratum functionalis is functionalis होनी तो कौन हला ना इस stratum functionalis endometrium layer टा degenerate करवा start. तो जो endometrium layer टा degenerate हबो सेटा कौन बाहर को माने हमरो vaginal द्वारा हमरो रिलीज हबो ब्लड जो लेयर्स गुडा को थिबो जो टिश्यू गुडा को थिबो से जो endometrium लेयर थिला सेटा आमर मेंस्ट्रुअल ब्लड हिसाब रे बाहर को बाहर. दैट्स अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम द 1. सो दिस इज द फेज स्टार्ट्स फ्रॉम द yearly primary follicle, then it develops your primary follicle. Okay,
देन प्राइमरी फॉलिकल रु सेकेंडरी फॉलिकल है सेकेंडरी फॉलिकल ये एस्ट्रोजेन मात्रा अधिक थिला सो नेगेटिव फीडबैक मेकानिज्म काम कला एफएसएच और एलएच अमाउंट कम है देन सेकेंडरी फॉलिकल जो टर्शियरी फॉलिकल सेठी एस्ट्रोजेन अमाउंट बहुत ज़्यादा अधिक हो गला देन पॉजिटिव फीडबैक मेकानिज्म स्टार्ट कला ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन अधिक इनक्रीज है सो आज रिजल्ट एफएसएच और एलएच भी अधिक है एफएसएच ता 2 ରୁ 3 गुण है बिकज देयर इज ए इनहिबिशन इज देयर एंड एलएच ता कौन है आमर 6 ରୁ 10 गुण है सो एफएसएच रो काम कौन मियोसिस 1 को कंप्लीट कला एलएच रो काम कौन ना ग्रानुलोजा सेल आ ठिका इंटरना को कहला प्रोजेस्टेरोन रिलीज करिया आई प्रोजेस्टेरोन रिलीज है जो सेटा कार्पस ल्यूटेम सेकेंडरी oocyte को बाहर कला सो सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप्स टू द टर्शियरी फॉलिकल एंड दिस टर्शियरी फॉलिकल डेवलप्स टू द ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इन द विथ द एक्शन ऑफ अ प्रोजेस्टेरोन कौन बाहर कला सेकेंडरी oocyte को बाहर करदेला सेकेंडरी oocyte तापर कौन है कंटिन्यू कला जदि फर्टिलाइज है fertilization hela means the sperm is waiting and if fertilization happens then the pregnancy starts if does not happen then corpus luteum ro kono fate ethi nirdhariत hela the corpus luteum starts being present in up to 9 days in the ovary due to the action of LH jete bele kono LH ta negative feedback mechanism द्वारा डाउन hela माने concentration कमिला सेते बेले corpus luteum आउ रही पारला नहीं सो corpus luteum then starts degenerating forms the corpus albicans एटी कौन हला ना प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल इज वेरी लेस ना प्रोस्टाग्लैंडिस बॉडी हार्मोन कौन करुच्ची ना वासोकंट्रिक्शन करुच्ची जोटा कौन ब्लड वेसल गुड़ाक ब्लड कनेक्शन टू द स्टार्टर फंक्शनलिस्ट एंडोमेट्रियम लेयर को कौन नैरोइंग कर दौर ब्लड वेसल गुड़ाक सो दैट द लेयर्स गेट डिजेनरेट एंड गोइंग थ्रू द एज ए कौन मेंस्ट्रुअल ब्लड से देन ब्लीडिंग फेज अगेन स्टार्ट हो देन प्राइमरी फॉलिक्युलर डेवलपमेंट देन अगेन द साइकिल कंटिन्यूज ओके अप टू व्हेन द प्रेगनेंसी एपर्यंत है प्रेगनेंसी है देन इट्स द साइकिल स्टॉप्स फ्रॉम देयर ओके अच्छा एटा होची ब्लीडिंग फेज एटा तार डिटेल एक्सप्लेनेशन एज अ स्टार्ट ऑफ डे 1 कौन कहूची the concentration of FSH and LH and estrogen and progesterone remain low प्रथम ओभारियन चेंजेस कौन होची एटी हार्मोनल चेंजेस एटी ओभारियन चेंजेस एटी यूटेराइन चेंजेस ओभारी रे कौन चेंजेस होची फर्स्ट डे आउ यूटेरस रे कौन चेंजेस होची सो रिडक्शन इन सेक्स हार्मोन्स ट्रिगर्स द प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कजिंग द नैरोइंग ऑफ यूटेराइन ब्लड वेसल मु कहतली जे यूटेराइन ब्लड वेसल कौन हो जीवो नैरोइंग कर द ब्लड वेसल सो दिस रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द स्टार्टर फंक्शनलिस the endometrium layer leading to the its breakdown and detachment so endometrium layer ta detach he jibo as estrogen and progesterone levels are low negative feedback is now absent this allows FSH and LH levels to begin rising towards the end of this stage now FSH and LH ta completely less thila the negative feedback mechanism nahi so it starts increasing to the end of this cycle so mane 5 to 7 days re start hobo increase kariba so around 6 to 12 primary follicle begin to develop further primary follicle ta kono secondary follicle change hobo so prostaglandins also induce the contractions of a myometrium which expel a degenerated endometrial layer along with the blood with the throughout the vagina menstrual flow lasts about 4 to 5 days with the fibrinolytic enzyme preventing the clot formation on the average 40 to 80 ml of blood is lost during each cycle okay so 40 to 80 ml blood release हुए each cycle then as a pre-ovulatory stage एटा bleeding phase था then pre-ovulation stage अब मैं कोई परिवार की estronic phase और you can say कोई परिवार की proliferative phase okay so एटा कौन hormonal changes होची कौन ovarian changes होची कौन uterine changes होची hormonal changes कौन होची ना production of the gonadotropin FSH and LH steadily increases during the phase increase course in this stage immature follicle in the ovary continues to grow it is some developing into secondary follicle and eventually a single dominant kono graphian follicle this growth is promoted by raising the gonadotropin level okay the developing follicle actively produce now estrogen a menstrual flow comes to an end and the uterine lining begins to again starts to rebuild
the starter functionalis layer starts and form again as endometrium undergo cell proliferation. Okay. Then estrogen levels in the bloodstream keep increasing throughout the place, reaching their highest point just before the ovulation. So highest point could reach just before the ovulation. So as Graafian follicle enlarges, fluid accumulates inside the antrum. The fluid cavity antrum gote thila. This the sharp surge of LH around the mid-cycle stimulate the production of enzymes that weaken the follicle wall weaken kala and causing the rupture the follicular wall and release of a mature ovum or the ovulation. The muscle layer of uterus again now myometrium undergoes hypertrophy, meaning individual muscle cells to enlarge. This ensures the uterine wall to become more thicker, okay, and more prepared for the possible implantation. Means implantation कौन ना the embryo टा आसी की starter functionalis रे attach हवा टाको हमें कोचे implantation है ना. Then हमारा luteal stage और post ovulatory stage और मैं क्या करिया progesterone stage. So level of progesterone and estrogen increase from ovulation and reach their peak by the mid of this phase. So after ovulation, the ruptured Graafian follicle transform into a corpus, okay, corpus luteum the कोचा okay, जोटा, okay, then fully develop around 22 days of the cycle. Elevated progesterone causes endometrium to switch to a secretory gland-rich phase, making it more adhesive in preparation of a possible implantation. Since fertilization does not occur, ଯଦି ହେଲାନି fertilization ହେଲାନି pregnancy ହେଲାନି, the level of progesterone and estrogen begin to drop in the latter half of this phase. ଯେତେବେଳେ latter half drop phase ହେଲା due to negative feedback mechanism, ସେତେବେଳେ corpus luteum ର presence ଆଉ establish ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ. So around 9 days after ovulation, the corpus luteum degenerate into corpus albicans, a non-functional scar-like structure no longer secretes any hormones. So around 28 days. So 9th days जाके presence establish करला और तापरे due to the action of LH, then तापरे जेतेबेले LH आउ एस्ट्रोजेन रो प्रोजेस्टेरोन रो कम हैला सेतेबेले LH भी कम हबो, एस्ट्रोजेन कम हैला LH कम हबो. LH कमिले जे तार आउ कोन एक्जिस्टेंस धीरे धीरे कमिबो. एक्जिस्टेंस कमिला माने स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग आउ अप टू 5 डेज भितरे कंप्लीटली डिजेनरेट है कि हमर कॉर्पस अल्बिकन्स बन गला. With high progesterone estrogen, the uterine wall continues thickening, okay, and reaching its maximum thickness around day 23. Okay, so जे पर्यंत कॉर्पस लुटियम प्रेजेंट अछि माने डिजेनरेट हेनी से पर्यंत थिकनिंग हबो. एते बेले जानिला कि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन हैपेंस, नाउ कॉर्पस लुटियम स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग. Then it will after 28 days जेते बेले कोन न प्रोस्टाग्लैंडिन vasoconstriction स्टार्ट करिवो सेते बेले लेयर गुडा को डिजेनरेट करिवो. High progesterone and estrogen exert a negative feedback effect on the pituitary, suppressing FSH and LH release, keeping their levels low. Now FSH and LH completely low at the 28th day. Now no new follicular development occurs during this stage. If fertilization does not take place, the drop in the estrogen and progesterone leads to the thinning means down degenerating, okay, of the uterine जो uterine thickening ହେଇଥିଲା जो मोटापा पाइथिला जो यूटेरस ता कोन गोटे थिकनिंग लेयर देइथिला स्टार्टर फंक्शनलिस रे जो एंडोमेट्रियम लेयर जो गोटे थिकनिंग लेयर थिला टू एक्सेप्ट द इम्प्लांटेशन सेटा धीरे धीरे कोन थिनिंग हबा स्टार्ट करियो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेज. ओके, सो सेही कथा कहूची. सो इफ विल गो थ्रू द एनसीईआरटी नाउ. सो कौन कहूची मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़िबा भल से. द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्रेमिट्स is called as the menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty, is called as a menarche. When it stops, then called as menopause. Okay, at certain time, means at the age of 40 to 50, so it will stop due to कौन secondary oocyte कौन गोटे बनियो गोटे थर रे. तो when it starts stopping, then it is called as the menopause. In human female, menstruation is repeated in average interval of 28 to 29 days, and the cycle even starting from the one menstruation till the next one is called as the menstrual cycle. In first day to 28 days कमे कहूचे आमे गोटे cycle the menstrual cycle. One ovum only is released in the ovulation during the middle during the
middle of the each menstrual cycle. The major events of the menstrual cycle are shown in figure 2.9. Okay, केमती डेभलप हो देख डेभलपिंग फॉलिकल देन मैच्योर फॉलिकल एटा रिलीज है बाहर को देन एटा कॉर्पस लूटम देन कॉर्पस लूटमटा डिजेनरेट है ये देख हार्मोनल लेवल है ये एस्ट्रोजेन बढ़ला ओव्यूलेशन लेवल कंप्लीटली पीक लेवल को आसला देन धीरे धीरे कमिला कॉर्पस लूटम ओके कॉर्पस लूटम बढ़ला देन स्टार्टिंग ऑफ द ब्लीडिंग फेज रे अगेन पुणी बढ़ बुझीगला से प्रोजेस्टेरोन लेयर आसला कॉर्पस लूटम ये पुणी अगेन बढ़ला then going down. Sorry. So the major events of the menstrual cycle are shown in figure 2.9. The cycle starts with a menstrual phase when a menstrual flow occurs at the last for the 3 to 5 days. The menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessel which forms the liquid that comes through the vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Okay. Lack of menstruation may indicate the pregnancy. However, it may also be caused due to the various the lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may be also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health. Okay. Now there are many changes lifestyle changes so there are many disorders on the menstrual cycle also due to the hormonal imbalance. The steroid also hormonal imbalance PCOD देखा जाउची. Okay, so there are due to life cycle changes also due to stress, obesity. This menstrual cycle also is not stopping of a menstrual cycle. It does not only indicates the pregnancy happens. It can also refer to many other disorders also. Okay. The menstrual phase is followed by a follicular phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. Primary follicle, then secondary, then tertiary, then mature Graafian follicle. Simultaneously, the endometrium and uterus regenerates with the proliferation. These changes in the ovary and uterus are induced by the changes by the levels of pituitary and ovarian hormones. Then the secretion of a gonadotropin, LH and FSH increase gradually during the follicular phase and stimulates the follicular development as well as the secretion of estrogen by the growing the follicles. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle about 14 days peak level. Then rapid secretion of LH leading to this maximum level during the mid-cycle called as LH surge induces the rupture of a Graafian follicle, thereby the release of a ovulation. The ovulatory phase is followed by the luteal phase, during which the remaining parts of the Graafian follicle means corpus luteum. The corpus luteum secretes the large amount of progesterone, which is essential for the maintenance of a endometrium. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum. Thus, other events of the pregnancy जेतेबेले कौन corpus luteum टा pregnancy हेले ही progesterone release करे up to 4 weeks then placenta करे. So this corpus luteum रो progesterone से तो release हवाटा का पाए ना endometrium रो जो attachment और implantation ने इटा help करे. So during pregnancy all the events of menstrual cycle stops and there is no further menstruation. In these absence of fertilization the corpus luteum degenerates. In the absence of a fertilization, the fertilization and then corpus luteum up to 9 days rahe, then starts degenerates. This causes disintegration of a endometrium. Disintegration means जो thick layer टा हितो सेटा thinning start हो. Okay, leading to the corpus luteum. This causes disintegration of endometrium leading to the menstruation. So menstrual blood flow start हुई. Then making a new cycle. In human beings, the menstrual cycle ceases means stops around 50 years. That we call menopause. This is termed as a menopause. Cyclic menstruation is an indicator of a normal reproductive phase extends between the menarche and menopause. कौन को cyclic menstruation माने प्रति month रे one cycle. It's around 28 to 30 days. The cycle जोटा हुए it indicates it's a normal reproductive cycle in between menarche and menopause. Okay, so किछिटा disorder आमे देखिबा. Okay, किछिटा important notes also.
अच्छा देख हिस्टेरोक्टोमी माने कौन ना रिमूवाल ऑफ यूटेरस, ओफरेक्टोमी माने रिमूवाल ऑफ ओवारी, ट्यूबेक्टोमी माने कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सो हिस्टेरोक्टोमी रे यूटेराइन चेंजेस किछि हुए, ओवारियन चेंजेस कौन हुए, मेंस्ट्रुअल साइकिल रे कौन चेंजेस हुए, फर्टिलाइजेशन रे कौन चेंजेस हुए, ये तीनटा आकर यू कमेंट ऑन द बिलो द वीडियो। ओके सो हिस्टेरोक्टोमी रे यूटेराइन चेंजेस कि ओवारियन चेंजेस कि मेंस्ट्रुअल चेंजेस कि फर्टिलाइजेशन रे कौन चेंजेस हुए। ओफरेक्टोमी रे जन रिमूव जब ओभारी को रिमूव करवा ताले यूटेराइन चेंज कौन हम, ओभारियन चेंज कौन हम, आउ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन चेंज हम, और फर्टिलाइजेशन में कौन चेंज हम। ट्यूबेक्टोमी कर जब फालोपियन ट्यूब को रिमूव करवा ए भितर कौन कौन चेंजेस हम, यू कमेंट ऑन द वीडियो। ओके देन फाइंडिंग आउट द ओव्यूलेशन डेज, केमिटी ओव्यूलेशन डे को हम फाइंड आउट करवा। मुझे तुमको कौन कही कर्पस ल्यूटियमटा 9 डेज रोवारी रे जदि प्रेगनेंसी हेलानी, देन 5 डेज डीजेनेरेट करियो, मीन्स लास्ट 14 डेज इज constant, that the menstrual cycle days completely depend upon कहार ना ब्लीडिंग फेज, केते दिन ब्लीडिंग होची अप्रोक्सीमेटली। ओके तो दिस 14 डेज जेते दिन मन कर 35 डेज है आमर कौन टोटल साइकिल, केते दिन काटी दबो ना 35 डेज रु लास्ट 14 डेज माइनस कर दबो, जेतिक दिन है केते दिन है 21। हाँ so 21 days is the ovulation day. So if someone asks that question, if a woman having ovulation the menstrual cycle having 32 days, then find out is the ovulation days। कौन करिवो 32 रु 14 माइनस करिवो 6, 32 रु 14 गले केते 18 आई थिंक 16 30 हाँ नहीं 6 हाँ 18 ओके 8 4 बार लिखना है कि हाँ 18 डेज। सो अराउंड 18 डेज इज द ओव्यूलेशन, दैट 18th day is the ovulation। okay so days of menstrual cycle minus 14 days equal to कौन ovulation day। okay so important notes किछटा डिजॉर्डर एथिरे अछि। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी माने जदि मेंस्ट्रुएशन ऑक्योर्स बिफोर द एज ऑफ 8 years पूर्व जदि आमर प्यूबर्टी है ताको आम कहे प्रिशियस। देन क्रिप्टोमेनोरिया कौन कहे ना ऑक्यूरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विदाउट एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हेनी, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो हेनी, बट देयर इज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑक्योर्स, ताको आम कहे क्रिप्टोमेनोरिया। मेनोरेगिया कौन कहे ना नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड लॉस 52 ml, इफ इट इज मोर मीन्स अप टू इट विल गो 100 ml, जब 100 ml पर रहे ताको आम कहे मेनोरेगिया। इट इज मोर देन द बट साइकिल रिमेन अनअल्टर्ड, साइकिल ठीक थी 28 डेज किंतु ब्लड फ्लो अधिक थी। पॉलीमेनोरिया कौन कहे ना मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिड्यूस फॉर्म नॉर्मल टू 20, मीन्स यहाँ कौन ना जदि मोर देन द 12 माने साइकिलटा कौन रिड्यूस फ्रॉम द नॉर्मल 20 माने 28 दिन रु मैंने जनरली ये 2 ରୁ 3 वीक जदि भितर गोटे साइकिल हो गला माने पाखापाखि 14 ରୁ 21 दिन भितर जदि साइकिल गोटे हो गला है आ तो 14 ରୁ 21 दिन साइकिल है कौन आमर जदि गोटे मसरे गोटे है 28 डेज टू 30 डेज आम नॉर्मली नौचे, तो गोटे मसरे वर्षे के 12टा मेंस्ट्रुअल साइकिल, यदि 12टा मेंस्ट्रुअल साइकिल है जब 12टा ରୁ अधिक है मीन्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स 28 डेज टू 30 डेज, इट इज लोअरिंग डाउन टू द केटे 2 weeks to 3 weeks, मीन्स 14 days to 21 days। यहाँ जब है कौन अमाउंट ऑफ दैट साइकिल नंबरटा बढ़ी से कह मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिड्यूस फ्रॉम द नॉर्मल 28 days टू ए साइकिल 2 weeks or 3 weeks एंड रिमेन कन्स्टांट एट दैट इंक्रीज फ्रिक्वेंसी। यहाँ कन्स्टांट भी रहा, इट्स नॉट दैट ओनली गोटे थर हो गला, इट्स नॉट लाइक दैट, जब कन्स्टांट रहे देन आम कहे पॉलीमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया कौन ना लेस देन 12 for years, मीन्स इफ इट इज द साइकिल इज मोर देन द 35 days, ओके more than the 5 weeks, 5 माने 35 5 into 7 35, so 35 to 6 weeks, okay 5 to 6 7 weeks जदि है आम कहे ओलिगो, मीन्स मोर देन द सॉरी लेस देन द 12 मैंने एमती है कौन ना 10टा कि 11टा हम 10टा कि 11टा हम 10टा हम है तो आम कहे ओलिगोमेनोरिया। ओके क्वेश्चन गोटे अच्छी, ओके यहाँ गोटे पेज नहीं जाऊँगी, so you can understand question होचे या
फीमेल करेंट एज अच्छी 40 years, puberty start होची 10th year रे, then find out the number of 2-degree oocyte. अच्छा एटा अच्छा ठीक अच्छे प्यूबर्टी स्टार्ट केते हला 10th ईयर रे यस नो केते वर्ष करेंट एज वर्तमान 40 माइनस 10 केते हला माने 30 ईयर कौन होइछि मेंस्ट्रुअल साइकिल होइछि गोटे ईयर रे हम जदि नॉर्मल एडल्ट नबा ताले 12टा होना नहीं 12टा साइकिल अच्छा 12टा साइकिल ले कौन 12टा 2-degree oocyte सो 30 वर्ष रे केते 30 गुणन 12 तो केतेटा हबो 360 सेकेंडरी oocyte यस सर नो बुझियला तो सेकेंड क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 कहूची से फीमेल करेंट एज होची 40 ईयर ओके ओव्यूलेशन सॉरी हमर कौन प्यूबर्टी स्टार्ट होइची at age 10 ताले ता हाँ आ गोटे कथा तार दीटा पुओ 2 boys ओके सी हैविंग 2 boys and 1 ओके मीन्स प्रेगनेंसी होची दीटा बॉयज आ गोटे देन फाइंड आउट the number of 2-degree oocytes ओके केमती हम अच्छा आम केते वर्ष देखा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल चली करेंट एज 40 माइनस 10 प्यूबर्टी 10th ईयर स्टार्ट होइछि सो 30 ईयर तार कौन मेंस्ट्रुअल साइकिल चली अच्छा 30 इयर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चली जो कौन सी हैविंग 2 boys and 1 girl ये देखनी बॉयज गर्लटा ट्विन होती किंबा दीटा बॉयज ट्विन होती कि गोटे बॉय गोटे गर्ल आइडियल कंडीशन दीटा बॉयज गोटे गर्ल माने 3टा प्रेगनेंसी सीधा ओके डोंट डू एक्सपेरिमेंट ओके जदि थी सेमती किसी से कहब है द 2 boys आर द कौन ट्विन्स ओके सो 3टा प्रेगनेंसी दीटा बॉयज गोटे झील दीटा पुओ गोटे झील तो 3टा प्रेगनेंसी जदि है 3टा प्रेगनेंसी जदि है ताले कौन आम देखा देख प्रेगनेंसी डेज के 9 months देन अगेन साइकिल रिस्टार्ट होगापी आउ 6 months सो अराउंड 15 months सो 15 months मीन्स 15 2-degree oocyte यस सर नो आरेस्ट होती माने एटा हेनी सो केतेटा प्रेगनेंसी गोटे प्रेगनेंसी रे एटा सो 3टा प्रेगनेंसी 3 × 15 इक्वल टू केते 15 × 3 45 सो 45 2-degree oocyte कौन आरेस्ट होती ड्यू टू द प्रेगनेंसी हेनी मेंस्ट्रुअल साइकिल हेनी कौन 15 month मेंस्ट्रुअल साइकिल हेनी गोटे बेबी है बेले तो 3टा बेबी होता बेले 45 month हो तो 45 month जो हेनी तो 45टा 2-degree oocyte रिलीज हेनी है ना नहीं सो ये 30 इयर्स रे 45टा 2-degree oocyte 30 months रे केतेटा oocyte डेवलप हवा कथा जदि नॉर्मल जदि था देयर इज नो प्रेगनेंसी देन 30 × 12 केतेटा था
360 होता जोटा लास्ट क्वेश्चन कले हाँ ना नहीं बैटरी 36 हाँ 360 अच्छा 45 2 डिग्री उस साइड है नहीं तो 360 माइनस 45 ओके सो इट अराउंड 315 सर नो हाँ 315 सो 315 2 डिग्री उस साइड yes or no ए क्वेश्चन ए दीटा क्वेश्चन एट किना थिला ओके दिस वन और दिस वन ओके सो सेम थिला ए क्वेश्चन ता मोइटी कल तुमको फीमेल करंट एज 45 एमने क्वेश्चन थिबो दे द फीमेल हैविंग द नाउ द करंट एज हैविंग 40 ईयर of a puberty started at age 10 find out the number of 2 degree side it is jodi tame kari parbo you can change the question also see having two boys who both boys are in the are the twins and having one girl seti kono dita pregnancy hela dita pregnancy mane kete 30 2 degree side captive 360 30 gale kete 330 hela according to the question you do it. Okay, in the next class we will study the structure of a human egg and fertilization process. Okay, thank you.